Hello students, today we are going to discuss about past tree example and how leftmost derivation and rightmost derivation can be drawn in the form of past tree. So last time we were discussing about what was past tree or derivation tree. Let us take an example. So let us CFG and TPS. तो ये चार टपल है ग्रामर के, तो n is yours, मतलब एस एन इज योर नॉन टर्मिनल. ठीक है, नॉन टर्मिनल इसमें एक ही नॉन टर्मिनल है एस, और एक ही दो टर्मिनल है ए और बी, एंड एक स्टार्टिंग सिंबल है कैपिटल एस, एक ही नॉन टर्मिनल, एक ही स्टार्टिंग सिंबल. these are your productions. So एक आपका S tends to SS हो गया, S tends to ASB, S tends to epsilon. Now we have to draw a derivation tree of AB double A double B. So we will take the production S tends to SS. This will produce ASB. Now S is replaced by, you can see, ASB, and S is replaced by again epsilon. Now again S is replaced by ASB, and S is again replaced by ASB. Two times it is replaced by ASB. So, and in last, when S is replaced by epsilon, it is ignored. Last time I told you, when we come to the final substring, we ignore the nulls. So in last step, you can see that here null is ignored. Now we have to draw the past tree. So we will start from start symbol S. Okay. So here is start symbol S, and S is reduced into S and S. We will expand the tree into two vertex, S and S. Now S is again expanded. No, so you have to start from left and go towards right. So leftmost is derived first, and S is expanded into ASB. Now S is again expanded into epsilon. Here again the rightmost S1 we expanded into A, S and B. Now this S is again expanded into A, S, B. So how will you derive the string? Now traversing the leaves. Where are leaves? These are the leaves. A, epsilon, B, A, and go to A and epsilon and B, and again reaching B. These are the leaves. So we can see that A, epsilon, B gives us the required string. What was the required string? A, B, double A, B. If you ignore the nulls, you can see the string A, B. This is A, this is B, this is A, and this is your again A, B and B. Okay, I think it's clear from the example. How will you derive a string and derive its derivation tree and draw its parse tree? Okay, so move on to our next section, that is sentential form and partial derivation tree. Partial derivation tree in the subtree of derivation tree or parse tree, such that either all of its children are in the subtree or none of them are in the subtree. Okay. If any context-free grammar, the productions are, suppose that, let us take an example. Sentential form का मतलब होता है कि हम
ट्री का एक पार्ट ड्रॉ करते हैं, वो भी स्टार्ट सिंबल उसमें होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसी ट्री क्या कहलाएगी? पार्शियल डेरिवेशन ट्री, क्योंकि उसमें सारे फुल्ली हमने स्ट्रिंग को डिराइव नहीं किया है। फुल्ली स्ट्रिंग को डिराइव नहीं किया है तो पूरी ट्री कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए इसको पार्शियल डेरिवेशन ट्री बोलते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर इसको जब नोटेशंस में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सेंटेंशियल फॉर्म। यू कैन ऑल्सो से दैट ऑल द प्रोडक्शंस आर अ टाइप ऑफ सेंटेंशियल फॉर्म। तो अगर इसका पार्शियल डेरिवेशन ट्री इस ग्रामर की डिराइव करें तो कैसे बनाएंगे? एस ए बी, दिस इज सिंपल। द फर्स्ट प्रोडक्शन एस टेंड्स टू ए बी, ठीक, जिसमें कि हम फर्दर एक्सपेंशन कर सकें। ठीक है, if a partial derivation tree contains the root s, it is called a sentential form। ठीक है, तो इसमें कितनी पार्शियल डेरिवेशन ट्री बन सकती हैं इस एग्जांपल में? एक तो आपका एस टेंड्स टू ए बी बन जाएगा, एस ए टेंड्स टू डबल ए, और एक बनेगी ए टेंड्स टू एप्सिलॉन, एंड एक बनेगी बी टेंड्स टू बी बी एंड बी टेंड्स टू एप्सिलॉन। These are partial derivation tree, you can separately draw। Okay, so move on to our next definitions, which is leftmost and rightmost derivation of a string. Now this is something new. A derivation tree can be drawn in two ways, that is leftmost derivation and rightmost derivation. A leftmost derivation is obtained by applying production to the leftmost variable in each step। कहने का मतलब है जितने बार भी आप स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे या जनरेट करेंगे, और अगर आपको लेफ्ट मोस्ट पे अगर कोई नॉन टर्मिनल मिलता है और उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी रिप्लेस करते हैं बार बार, जितने बार भी आप प्रोडक्शन करेंगे, मतलब जितने बार भी स्ट्रिंग के स्टेप्स जनरेट करेंगे, हर स्टेप पे आपको जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूट करना है टिल यू गेट ऑल द टर्मिनल्स, जब तक कि आपको सारे टर्मिनल्स ना मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं और राइट मोस्ट में क्या? ठीक उल्टा, अगर हर स्टेप पे आपको राइट मोस्ट जो वेरिएबल है या नॉन टर्मिनल है उसको आप रिप्लेस करते हैं, then that will become as rightmost derivation। तो एग्जांपल देखते हैं। दिस इज एन एग्जांपल, x is tends to x plus x, x star x and x tends to x and a। तो यहाँ पे टर्मिनल्स क्या है? केवल a टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल है, स्टार टर्मिनल है। ठीक, और नॉन टर्मिनल सिर्फ एक है, देखिए x। अब इसमें देखिए कि सबसे लेफ्ट साइड पे कौन सा? ये वाला x है। इसके इस वाले प्रोडक्शन में सबसे लेफ्ट पे कौन है? ये वाला x है। ये x टेंड्स टू x है तो इसमें लेफ्ट राइट को यही रहेगा x। और तो हमको मान लीजिए ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है a प्लस a स्टार a। ठीक, सो हाउ विल यू जनरेट? वी विल स्टार्ट विथ, हमको पहले प्लस चाहिए। ठीक है, सो वी विल पिक अप द x प्लस x प्रोडक्शन। x प्लस x को पिक करेंगे तो देखिए लेफ्ट मोस्ट पे सबसे x ये वाला है तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे a से। फिर आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे तो a प्लस x है। अब x को फिर हमें a स्टार a चाहिए तो फिर हमने क्या किया? सेकेंड वाला प्रोडक्शन x स्टार x यहाँ पे रिप्लेस कर दिया x से। अब अगेन फिर लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट, तो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा? x है, इसको फिर रिप्लेस कर दिया हमने a से। और अगेन कोई फाइनल x को अगर हम, क्योंकि हमें ए स्टार ए बनाना है तो फाइनली x को हम a से रिप्लेस कर देते हैं। देखते हैं इसकी डेरिवेशन ट्री कैसे ड्रॉ करेंगे। Step 1 we will see, this is your step 1,
x plus x was expanded into x plus x, and x was also expanded to a, and in third step x was expanded into x star x, and now you can see that left hand side tree is expanded always. You can see this left part is expanded first. Finally we derive a tree. This is your final tree with left derivation. And now with the right derivation, we will again pick up the rightmost non-terminal. This is x. Now it is replaced by a, and again x star a. Now this x is replaced by x plus x star a. Now the rightmost a star a. In previous example, we were taking plus part first and star part later on. But in this example, you can see that you are taking asterisk part first and plus part later on. So this is your right derivation tree. I will draw it. Again x star x, and rightmost tree is expanded first. Then we will move on to left, right to left. Again in this case, right x is expanded in the left part. And finally we get the string a. Okay. So go to the definition. So we can conclude that definition is, in context-free grammar G, there is a production in the form x tends to xa, and where x is a non-terminal and a is a string of terminal. It is called a left recursive production. Grammar having a left recursive production is called a left recursive grammar. रिकर्शन मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉल बार बार सेम टर्मिनल अपने प्रोडक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है, और बस उसका प्लेसमेंट लेफ्ट है कि राइट है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, x टेंड्स टू एक्स ए अगर लेफ्ट है, और x टेंड्स टू एक्स है अगर राइट है, ठीक, ओके।